हेलो एवरीवन गाइज। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने घर पर बैठकर खुद को आधा घंटा देकर और आप स्टोरी टेलिंग और कॉन्वर्सेशन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सवाल उठता है कि हम कैसे किसी फेक कहानी को बनाएं। तो गाइज आपको एक हाफ सेंटेंस लेना होगा। जैसे मैं सेंटेंस ले रहा हूँ कि आई वेंट टू मार्केट। अब मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना है, कुछ ना कुछ झूठ मूठ का क्रिएट करना है। अब ये खुद करना पड़ेगा बॉस, ये तो करना पड़ेगा। आप एक मोबाइल फ़ोन लीजिए और जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे आप रिकॉर्ड कीजिए। अब आप कैसे बोलेंगे? आप अपने घर से मार्केट जाइए। इतनी अंग्रेजी बोली कि मैं घर पर था और मुझे सब्जी खरीदना था, मार्केट गया। मार्केट जब आप गए तो आप मार्केट में कुछ करा दो, या तो मार्केट में आप अपने दोस्त से मिले। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है बारिश होने लगी, हो सकता है कि वहाँ कोई चोर आ गया, हो सकता है कि आपको किसी स्कूटी ने हिट कर दिया, हो सकता है कोई बुल वहाँ पर घुस आया, हो सकता है कोई आपको गाली देने लगा, हो सकता है कि आप अपने टीचर को वहाँ पर देखें। एनीथिंग। उसके बाद जब आपने देखा कुछ हुआ तो आगे क्या हुआ? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहा है। ये करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी के अभी ऑन द स्पॉट। चलो मार्केट वाला उठाते हैं। ओके, सो मैं घर से शुरू करता हूँ कि yesterday आई वॉज एट माई होम. It was around 6 o'clock in the evening, and I wanted to buy some vegetables, so I went to the nearby market. When I went to market, I went to a greengrocer and started asking the rate of the vegetables available. All of a sudden, I saw a girl who was clad in an alluring dress which attracted me a lot. She looked stunning and resplendent. I decided to go to that stall where that girl was standing with a view to just looking at her or spending some time close to her. So I went to that stall and I started talking to that the seller. All of a sudden, what I saw that in the twinkling of an eye, a guy who looked very ugly, whose face and hands seemed to be grubby, who was wearing a threadbare clothes, came and snatched the mobile of the girl and ran away. It happened in the twinkling of an eye. The girl raised an alarm. Everybody started looking at the girl, and girl was saying, see, thief, thief, he snatched my mobile phone, he's running. In an instant, I, as a human being, and with a view to impressing that girl, started running after that thief. And finally, I caught him, I overpowered him, and took the mobile phone back from him. I came back to the girl. Everybody was looking at me. I handed over the mobile phone to that girl. She looked into my eyes and said, "Thank you." I just grinned, and after that, I bought some fruits and vegetables, and saying bye to the girl, I went away from there. I came back to my home. When I went to bed, I was not feeling sleepy. I started thinking about that girl, about her beauty, about her dress, about the way she was raising an alarm, about the way she was talking to the greengrocer. And next week, I again went to the same market, and luckily, I happened to see the same girl. When I saw that girl, I walked up to her and I said, "Hi." The girl looked at me and said, "Hey, you're the same guy who gave me my mobile phone back."
I said, yeah, I'm the same guy who ran after the snatcher and got the mobile phone back. She shook hand with me. It was a great touch. And she started talking to me. She asked my name. So after having a conversation, I said, okay, thank you, ma'am. I have to go. So when I started going, suddenly the strap of my slipper broke. The girl saw it. The girl said, hey, hey, wait, 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 wait. I can see the strap of your slipper broke. How will you go back to your home? You come with me, sit in my car. I said, thank you, ma'am. I sat in the car. And she took me to a footwear showroom. There, she bought a pair of slippers for me. I put on those slippers, and then she asked me, where do you live? I told her the place where I lived, and she dropped me at my home. When I came out of the car, being a gentleman, I asked that girl to come to my home because she helped me a lot. She agreed and she came to my home. When I opened the door, we both entered. She sat on the couch and I asked her, what would you like to have, ma'am? Tea, coffee, anything else? She said, I would love to go for tea. I said, okay, ma'am, I'm going into my kitchen to make tea for you. She said, I also want to come with you to help you. I nodded. So I, along with her, started making tea. Suddenly, light went off. Then I lit the candle. When I lit the candle, she saw a cockroach. And seeing the cockroach, she ran amok and hugged me tightly. When she hugged me tightly, oh my God, I felt as if I had been in heaven. It was really a great moment for me. I started caressing her hair and I was thinking about her. I was thinking about this moment. I was enjoying this moment. Suddenly light came. I became sad. I did not want light to come back. However, I deviated from that situation and I made tea. After that, we went to the living area and we had our tea. After that, we exchanged each other number, and that girl saying bye to me sat in her car and the car zoomed off. I started thinking about her. It was a great moment. वेल गाइस, आपने देखा कि झूठी कहानी, देखिए मैं कहाँ से कहाँ चला गया। मैं ये बिल्कुल सत्य नहीं है जो मैंने बोला, एकदम झूठ है। तो और आपको क्या करना है, नॉर्मल इंग्लिश बोलिए। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम मुहावरे डाल दे और ये कर दे, ज़रूरी नहीं है। अरे भैया, पहले अपनी अंग्रेजी को उस काबिल बना लीजिए कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। तब बारी आएगी कि आप डेकोरेट करेंगे। तब आप क्या करेंगे कि जो नॉर्मल वाले वर्ड है उसको हटाएंगे और उसकी जगह एकदम मोटे मोटे एडवांस्ड वर्ड्स को पिरोना शुरू कर देंगे। वो आएगा, वक्त आएगा। अभी तो बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप कीजिए, करके देखिए। अगर आप एक हाउसवाइफ है, आप कहती हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, या मुझे कैसे पता चलेगा मैं सही बोलती हूँ गलत बोलती हूँ। मैडम, आपको इतनी अंग्रेजी तो आपको आनी चाहिए कि आप अपने सेंटेंसेस बना सको। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है कि आई वेंट होगा कि आई गो होगा कि आई एम गोइंग, नहीं आता है, तब तो आपको कहीं ना कहीं क्लास की ज़रूरत है। या तो आप यूट्यूब पर बहुत बेसिक क्लास सीखिए, नहीं तो कहीं से सीखिए कि आपको अपनी बातों को सेंटेंस में कन्वर्ट करना आ जाए। जिसको सेंटेंस बनाना आ गया ना, वो ये खेल खेले जो मैं सिखा रहा हूँ, ये जो स्टोरी टेलिंग है वो करे। वो अपनी गाड़ी खुद चलाए और फिर चेक करे रिकॉर्ड करके कि सही था कि गलत था। किसी वर्ड मीनिंग की चिंता ना कीजिए। जब आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप एक फेक कहानी बना रहे हैं, तो उस समय जैसा वर्ड आ रहा है, ऑफ कोर्स वर्ड आएगा तभी आप क्रिएट करेंगे। नॉर्मल आने दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी सेंटेंस करेक्ट होनी चाहिए। ये करके देखिए। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा मैंने जो स्टोरी बनाई, और आप भी ऐसा करके देखिए गाइस।
तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं आप में से कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ही की इंग्लिश अच्छी होगी। सो इस वीडियो को कीजिए लाइक। मिलते हैं अगले एपिसोड में।